Hello everyone, in this video I will be teaching you error detection and correction using Hamming code. So first of all, when we talk about error correction, so error correction is done in two ways. The first one is backward. The first one is backward error correction, and the second one is forward error correction. In this, retransmission is done, and in this one, error at the specific bit position is detected and then corrected. So we will see this one, forward error correction. So how is this done? This is done by using Hamming code. So first of all, we need to understand that what is a Hamming code. So suppose if we have a data of m number of if we have a data of m number of bits, then it is required to add some some parity bits, or you can say redundant bits. We will denote this with r. Okay, so m is number of bits and r is number of parity bits, or you can say number of r bits. So how many number of redundant bits are required? So this is something that we need to calculate. So for this, we have a formula, that is 2 raised to power r should be greater than equal to m plus r plus 1. So 2 raised to power r greater than equal to m plus r plus 1. So if I give you a very basic example regarding this formula, like suppose if we have value of m is equals to 2, okay, m is equals to 2,
So now we will put 2 raised to power r greater than equals to 2 plus r plus 1. So 2 raised to power r greater than equal to r plus 3. Now we need to see what should be the value of r so that this condition satisfies. So if we place in this, if we place r is equals to 1, so what will be the result? So it will be 2 raised to power 1 greater than equals to 1 plus 3. So this is what? 2 greater than equals to 4. Does it satisfy? No. That means I need to increment. Now I will place r is equals to 2. So this will be 2 raised to power 2 greater than equals to 2 plus 2, 2 plus 2 raised to power 2 plus 2 plus 2 plus 1. So now if we calculate this one, so it will be 4 greater than equals to 2 plus 2, 4 plus 1, 5. Again, this one does not satisfy. Now we will place r is equals to 3. So it will be 2 raised to power 3 greater than equals to 2 plus 3 plus 1. So now the answer will be 8 greater than equals to 2 plus 3 is 5 plus 1, 6. Yes, this condition satisfies. So if we have m is equals to 2, then if we have m is equals to 2, then r will be equals to 3. Fine. So this is how we have calculated. So now, as we know, that m plus r will be the Hamming code. So now what is Hamming code? This is something which is going to be this code, this data plus those parity bits. So this whole combination is going to be transmitted. Fine. So if I take it graphically, so this is my Hamming code of size r m plus r number of bits. Now the next question is that we are now required next thing is to identify the positions of r bits. So for this purpose, what we will do, simply 2 raised to power r, such as
r's value will range from 0, 1 up to n. So this is a simple formula. So if we place r is equals to 0, so we will have 2 raised to power 0, that is 1. So 1 will be the first position. If I, for your ease, I will separate this data like this. So when r is equals to 1, so 2 raised to power 1, that means 2. And then when r is equals to 2, so 2 raised to power 2, that means fourth position. So this is the first position, this is the second position, and this is third position. If we place r is equals to 3, so 2 raised to power 3 is equals to 8. That means 8th position. Like this. So I hope now it is clear to you. So that how we are going to place parity bits with my data. So what we will do now, we will simply take a data set and we will transmit it. Okay. So we will start with an example. Suppose my data is 1011. What is my data? 1011. So how many m number of bits? So m is equals to 4. Now we need to identify our parity bits. So how many parity bits? So we will simply place 2 raised to power r greater than equals to m plus r plus 1. So now put the values 2 raised to power r greater than equals to 4 plus r plus 1. So 2 raised to power r greater than equals to r plus 5. So here we will place r. For r is equals to 1, it will not satisfy. For r is equals to 2 also it will not satisfy. For r is equals to 3 we can go for a trial. So 2 raised to power 3 greater than equals to 3 plus 5. Yes. Here it is satisfying. So 8 is greater than equals to 8. This one is perfect. That means now now r is equals to 3, m is equals to 4. So Hamming code that is to be transmitted will be of m plus r size. That is 4 plus 3 is equals to 7. Fine. Now you have to understand. See this one. Here we identified that what will be the positions of parity bits. Fine. So because in total we have total 7 bits and there are three redundant bits or parity bits. So how we are going to place them? See. So I will break this one into exact 7 sections. Fine. So let me name them first of all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remember, यहाँ आप 0 से शुरू नहीं करेंगे. ठीक है. Now, because we know from this section
that parity bits are at 1, 2 and 4th position, because 8th position is not applicable. Why? Because here we have the last field up to 7 only. So we will mention parity bits here: 1 at 1 P1, at 2 P2 and at 4 P4. Fine. P1, P2 and P4. So what are the rest fields? These rest fields are what? These these rest fields are my data fields. So this will be D3, D5, D6 and D7. So this one, this one, this one and this one. These are what? These are my data fields. And if I talk about this one and this one, these are what? My parity fields. Okay. Now, fill the data. So fill the data. So we will fill 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. डेटा क्या था हमारे पास में? हमने डेटा लिया है 1011. सो वी विल फिल. डेटा कहाँ कहाँ पर है? 3 पर. सो 1 and then 1 0 and 1. सो 1011. ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा. ये है हमारे पैरिटी बिट्स. ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो पैरिटी बिट्स है ना, इन्हें क्या लिखेंगे. ठीक है, इन पैरिटी बिट्स की क्या वैल्यू होगी. ठीक है, ये जो पैरिटी बिट्स है ना, इनकी क्या वैल्यू कैलकुलेट होगी जिससे कि मेरा हैमिंग कोड जनरेट हो सके. तो पैरिटी बिट्स को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. जब हैमिंग कोड बनाया गया था तो हैमिंग कोड को बनाते वक्त ये डिसाइड किया गया था कि जो एक सिंगल पैरिटी बिट होगी ना, वो कौन कौन से डेटा बिट्स को हैंडल कर सकती है. ठीक है, कौन कौन से डेटा बिट्स को हैंडल कर सकती है. तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो पैरिटी 1 होगा वो क्या करेगी, जहाँ पर भी डेटा के फर्स्ट पोजीशन पर, डेटा की फर्स्ट पोजीशन पर जहाँ जहाँ पर उसको 1 मिलेगा ना, ठीक है, वो उन सबको हैंडल करेगी. ठीक है, और P2 क्या करेगी, जिस डेटा की सेकंड पोजीशन पर 1 मिलेगा वो उसे हैंडल करेगी. अगर P3 की बात करूं तो P3 क्या करेगी, जहाँ थर्ड पोजीशन पर 1 मिल रहा हो वो उसे हैंडल करेगा. और P4, वैसे तो हमने जो डेटा लिया है उसमें P4 है नहीं, पर फिर भी अगर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ कि P4 क्या करेगा, जहाँ पर भी फोर्थ पोजीशन पर 1 होगा वहाँ पर ये इसे कंसीडर करेगी. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर फोर्थ पोजीशन पर कंसीडर करेगी या फर्स्ट पोजीशन पर कंसीडर करेगी तो ये पोजीशंस वाली वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो उसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है. मैं वापस से यही वाला स्ट्रक्चर बना रही हूँ. सो दिस इज योर डेटा फ्रेम. ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगी, हम ना इन्हीं को एज इट इज़ रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखो ये है 1, ये 2 था, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है एंड 7. अब 1 को हम लोग क्या लिखते हैं बाइनरी के अंदर, 001. इसे हम क्या लिखेंगे, 010. इसे हम क्या लिखेंगे, 011.
इसे हम क्या लिखते हैं 100, इसे क्या लिखेंगे 101, इसको क्या लिखेंगे 110, इसको क्या लिखेंगे 111। ठीक है, यहाँ तक का आपको समझ में आ गया। मैंने सिंपली क्या किया है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला पूरा का पोर्शन, ये मैंने क्या किया है कि मैंने उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा है। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ तो मेरी पैरिटी बिट कहाँ थी, एक तो ये है, एक मेरी पैरिटी बिट ये थी, और एक मेरी पैरिटी बिट ये है। तो अगर मैं देखूँ P1 के लिए, तो P1 किस किस को हैंडल करेगी, जहाँ जहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर 1 है। तो देखो कहाँ कहाँ पर है, 1 पर, फिर 3 पर मिला, ये देखो, फिर ये देखो 5 पर, और देखो 7 पर भी मिल रहा है। यहाँ चेक कर लो वापस से, देखो 1 पर मिला, फिर 3 पर मिला, फिर 5 पर मिला, फिर 7 पर मिला। ठीक है, तो P1 तो इन सबको हैंडल करेगी। नेक्स्ट देखते हैं P2। अब P2 किसको हैंडल करेगी, जिसमें सेकंड पोजीशन के ऊपर 1 आ रहा हो। तो देखो यहाँ तो है नहीं, यहाँ है, तो यानी कि 2, फिर 3 पर भी मिल गया, फिर 6 पर मिल रहा है, देन 7 पर है, तो ये इन्हें हैंडल करेगा। और जो P3 है वो किसे हैंडल करेगी, तो P3 के लिए हमने क्या बोला कि थर्ड पोजीशन पर 1 होना चाहिए। देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ मिल गया, तो 4, फिर 5, 6 और 7। ठीक है, 4, 5, 6 और 7, ये क्लियर है। अब आप ना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ना हर बार ये चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आप याद रख लेना कि P1 के लिए 357, P2 के लिए 367, P4 सॉरी ना, मैंने गलती से 3 लिख दिया था, P4 के लिए 567। ये आपको याद रख लेना है, मतलब दिस इज़ द स्टैंडर्ड रूल। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये चीज़ एज इट इज़ याद रख सकते हो। तो अब बात आती है कि अब हमें पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पैरिटी बिट कैलकुलेशन। ठीक है, अब पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक्चुअली में कौन सी पैरिटी लेने वाले हैं। कौन सी पैरिटी लेने वाले हैं, इसका मतलब कि या तो हम इवन पैरिटी लेंगे या फिर हम ऑड पैरिटी लेंगे। इवन पैरिटी का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर नंबर ऑफ वंस जो हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वंस जो हैं, ठीक है, रुको मैं इसे वापस लिख देती हूँ कि नंबर ऑफ वंस जो होंगे ना वो सब इवन होंगे, और इसमें क्या होगा कि जितने भी नंबर ऑफ वंस हैं वो सब ऑड होंगे। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी किसी डेटा के ऊपर कोई भी कोड जनरेट किया जाता है, जब भी उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, हम लोग इवन पैरिटी फॉलो करते हैं। ठीक है, मेजरली हम लोग इवन पैरिटी फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने आप लोगों को LRC और VRC पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको कहा था कि हम इवन पैरिटी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इवन पैरिटी ले रहे हैं। अब इवन पैरिटी के लिए अब हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है हमारे P1 के लिए, P1 कैलकुलेट करेंगे। तो P1 किस किस को हैंडल कर रही थी, P1 किस किस को हैंडल कर रही थी, मैं वापस से दिखा देती हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए P1 किसको हैंडल कर रही है, 3, 5 और 7 को। तो हम क्या करेंगे, P1 के लिए 3, 5 और 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 3, 5 और 7 क्या चीज़ है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वापस से हमारा डेटा। तो ये मैंने वापस से फ्रेम बना लिया है। ठीक है, आपको बार बार वैसे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं,
क्योंकि एक बार आप बना लेंगे फिर आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए पिछले वाले पेज पर था ना, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए वापस से बनाया है। तो अब हमें चेक करना है कि 3, 5 और 7 पर क्या वैल्यूज़ हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो 3 पर क्या वैल्यू है 1, 5 पर क्या वैल्यू है 1, 7 पर क्या वैल्यू है 1। तो ये कितना है, ये एक ऑड पैरिटी है, ये एक ऑड पैरिटी है। तो मैंने क्या कहा कि हम इवन पैरिटी कंसीडर कर रहे हैं। सो क्या करेंगे, मेक दिस इवन, इसे इवन बना दो। इसको इवन कैसे बनाएंगे, बाय प्लेसिंग P1 इज इक्वल्स टू 1। तो यानी कि P1 3, 5, 7, तो ये 111 था और यहाँ हमने 1 कर दिया। सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एन इवन पैरिटी। क्लियर है? आई होप दिस वन इज क्लियर। सो अब हम P1 की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। सो P1 इज इक्वल्स टू 1। अब सेम एज इट इज़ ना हम P2 के लिए भी कर लेंगे। तो P2 हमें पता था, P2 के लिए क्या चीज़ आ रही है 3, 6, 7। सो P2 के लिए 3, 6 एंड 7। तो 3 पर देखो क्या वैल्यू है 1, 6 पर क्या वैल्यू है 0, 7 पर क्या वैल्यू है 1। ये ऑलरेडी इवन है, ये क्योंकि ऑलरेडी इवन है इसका मतलब कि P2 की वैल्यू मैं 1 नहीं रख सकती, तो मैं P2 की वैल्यू क्या रखूँगी 0, जिससे कि ये ओवरऑल क्या बन जाएगा इवन पैरिटी। सो P2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम P4 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो P4 के लिए हमारे पास में क्या वैल्यूज़ थी, ये रही 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7। अब 5, 6 और 7 वैल्यूज़ रख लो 1, 0, 1। अब देखो वापस से इवन पैरिटी मिल गई मुझे बाय डिफ़ॉल्ट, इवन पैरिटी मिल गई। इसका मतलब P4 की वैल्यू क्या रखूँगी 0। तो P4 की भी वैल्यू क्या आ गई 0। नाउ ये सारी वैल्यूज़ इस वाले फ्रेम में यहाँ पर, यहाँ इन सब जगह पर फिल कर दो। सो अब मैं ये वैल्यूज़ फिल कर रही हूँ। ठीक है, ये देखो ये 1 था, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, P1। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से पढ़ते जाना P1। तो P1 की वैल्यू क्या आई है 1। नाउ P2 की वैल्यू क्या आई है 0। अब डेटा 3 के ऊपर तो ऑलरेडी हमारे पास में है 1। P4 की वैल्यू क्या आई है 0, और ये बाकी का डेटा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये क्या है, दिस इज़ योर हैमिंग कोड, दिस इज़ योर हैमिंग कोड। तो जो डेटा ट्रांसमिट होगा दैट विल बी 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1। ये तुम्हारा हैमिंग कोड, ये तुम्हारा हैमिंग कोड जनरेट हो गया। ठीक है।